गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पार्ट 3। एंड अगर अब तक आपने 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं जो कि मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किए हैं तो प्लीज़ जाइए देखिए और उनको वॉच करें एंड सीखें। अगर आपको पसंद आता है तो मेक श्योर आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द वीडियो इज़ की फाउंडेशन की एप्लीकेशन हो गई है, स्किन केयर हो गया है। नाउ पाउडर सेटिंग। पाउडर सेटिंग के लिए मैंने अपने हैंड में ट्रांसलूसेंट पाउडर ले लिया है। ठीक है, दिस इज अ ट्रांसलूसेंट पाउडर। मैं कोई कॉम्पैक्ट यूज नहीं कर रही हूँ राइट नाउ। ठीक है, ओनली ट्रांसलूसेंट पाउडर। एंड मैं एक पफ यूज कर रही हूँ। गाइस कैन सी, ये पैक ब्रांड का पफ है। दिस इज अ लार्ज पफ। एंड मैं पफ में इस तरीके से पाउडर को पिक करूंगी लाइक दिस। यू गाइस कैन सी। ठीक है, पफ की हेल्प से मैं अप्लाई करने वाली हूँ पाउडर को एंड यू लाइक इट डेफिनेटली। उसके बाद आई एम गोइंग टू सेट माई अंडर आई फर्स्ट। इस तरीके से आई एम गोइंग टू टैप इट। ओके, थोड़ा ज़्यादा लग जाता है तो डोंट यू वरी, इसको हम हटा देंगे ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैं ये पाउडर लेकर अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे हो गई हमारी पाउडर सेटिंग कंप्लीट। एंड इसके बाद आप कोई भी फ्लफी ब्रश ले सकते हो। ठीक है, मैं इसकी हेल्प से इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही छोड़ेंगे कुछ सेकंड के लिए। कुछ सेकंड हो जाएंगे अभी या इसको लगाए हुए कुछ सेकंड हो गए हैं। एंड देन मैं इसको इस तरीके से डस्ट ऑफ कर दूंगी जो भी एक्सेस होगा। ओके, लाइक दिस। ओके, डन। ये थी पाउडर सेटिंग। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज कॉन्टोरिंग। ओके, तो कॉन्टोरिंग के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस कॉन्टोरिंग शेड। दिस इज माय फेवरेट वन। दिस इज फैशन आर्टिस्ट स्विस ब्यूटी पैलेट। एंड ये ब्रश मैं यूज कर रही हूँ। दिस इज वेट एंड वाइल्ड ब्रश। आई एम गोइंग टू यूज दिस। ओके, वेट। नाउ सबसे पहले हम कलर पिक करेंगे। एंड हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे लाइक दिस। ओके, अपवर्ड स्ट्रोक्स में करेंगे लाइक दिस। Okay, now you guys can see. Yeah, you guys can see. बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, और सेम इस तरीके से जॉ लाइन पे।
अब बारी आती है नोज कॉन्टोरिंग की। सो मैं यही शेड लेने वाली हूँ एंड देन मैं इसकी एप्लीकेशन करने वाली हूँ लाइक दिस, अपवर्ड स्ट्रोक्स में। अभी मैं आपको दोनों लाइक साइड पे डिफरेंस दिखाऊंगी, यू गाइस कैन सी। सेम इसी तरीके से इस साइड पे करेंगे। एंड देन एक लाइट शेड लेके आप अपने नोज को इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे। कोई भी लाइट शेड, कोई ये शिमरी शेड नहीं है, सिर्फ लाइट शेड है, दैट्स इट। फाइन, सी। सो ये हो गया है कंटूरिंग पार्ट कंप्लीट। ओके, सो नाउ ब्लशर पार्ट। सो ब्लशर के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस मास्टर क्रोम फ्लश क्रिएटर ब्लश एंड दिस इज आफ्टर ग्लो, इसका नाम है। एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस फ्लफी ब्रश। सो इस तरीके से मैं ब्लश को पिक करूंगी लाइक दिस एंड देन इसकी एप्लीकेशन करूंगी लाइक स्माइल करते हुए। इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल शीन है, सो ये एज अ हाइलाइटर भी काम करती है। सो या हल्का सा नोज पे अप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। ओके, okay, so the next step is highlighting. Okay, highlighter, and for highlighter I'm going to use this master chrome face studio highlighter जो कि metallic highlighter है golden में, and this is molten gold shade and I'm going to use this fan brush. So the name of the brand is Wet n Wild. So let's do it. Take the highlighter like this. ओके, एंड देन इसकी ही एप्लीकेशन मैं नोज पे करूँगी एंड देन हाथ से करने वाली हूँ, आप ब्रश से भी कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे हमारा ये पूरा जो पार्ट है कंप्लीट होता है, लाइक कॉन्टोरिंग का, हाइलाइटिंग का, ब्लशिंग का एंड फेस सेटिंग भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि आप किस तरीके से फाउंडेशन को सेट कर सकते हो। सो अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि मैं एक प्रॉपर आई लुक शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यहाँ तक की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो लेट्स लाइक मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय गाइज।
है।